हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। जैसे कि हम लोग लास्ट क्लास में हम लोग देखा था कि डाटाबेस नोड होता क्या है, और हम लोग डिटेल में देखे थे कि डाटाबेस नोड किस लिए कवर करता है, किस किस कंडीशन में नॉट वर्किंग लाइक दैट, कि हम लोग उसमें आउटपुट कंसेप्ट यूज कर सकते हैं, इनपुट कर सकते हैं। इस तरह से हमने डिटेल में देखा था। आपको देखना है तो जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। उसी चीज में आगे बढ़ते हम लोग देखेंगे आज की हम लोग देखने वाले हैं फिल्टर। ओके, तो फ़िल्टर नोड बेसिकली किस लिए यूज़ होता है और क्यों यूज़ होता है, हम लोग इस डिटेल में देखते हैं। तो लेट मी सेम फ्लो एंड लेट मी डिलीट दिस एंड यूज़ द फ़िल्टर नोड हियर। दिस इज द फ़िल्टर नोड राइट इन द राउटिंग। ड्रैग एंड let me connect it to the same thing. Okay, if you see here in the filter node, there is four terminal. One is a failure terminal, other is a non terminal, and a false and a true. Okay, so what will the filter node basically do? Filter node is used to filter the message under the logic defined under the filter node। इसके अंदर में जो भी लॉजिक डिफाइंड है, इसके अंदर में जो भी लॉजिक डिफाइंड है, उसके हिसाब से फिल्टर करें मैसेज को। इट विल सेंड टू द आउटपुट टर्मिनल। डिफरेंट डिफरेंट जगह ये भेजे, कहीं और भेज देगा, कहीं और भेज देगा, कहीं और भेज देगा, इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन में भेज देगा। तो फिल्टर नोड सेंड द मैसेज टू डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन ऑन द फिल्टर लॉजिक सेंड इनसाइड द सेट इनसाइड द फिल्टर नोड। ओके, नाउ यहाँ पर एक चीज और है। अगर फिल्टर नोड आप देखें, यहाँ पर सेम चीज यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर जो है आपके पास कंप्यूट नोड करके जो यहाँ पर नहीं है। जैसे सेम चीज़ हम देखे थे यहाँ पर कंप्यूटर मोड देखे थे कि यहाँ पर जो है ESQL मॉड्यूल करके, और यहाँ पर कंप्यूटर मोड पे। बट यहाँ पर जो है फिल्टर नोड में कंप्यूट मोड करके नहीं है। ओके, तो सेम थिंग यहाँ पर भी होगा। फिल्टर नोड में जो होगा कि यहाँ पर नो कंप्यूट नोड, कोई कंप्यूट नोड कंसेप्ट नहीं होगा। ठीक है, नो लोकल इन्वायरमेंट जो बना रहा था। तो हमने बोला था कि देयर इज नो कंप्यूट नोड, नो नो कंप्यूट नोड, नो लोकल इन्वायरमेंट एंड नो इनपुट नोड। यहाँ पर ये होता है। यहाँ पर ना ही हम लोग लोकल इन्वायरमेंट यूज कर सकते हैं, ना ही यहाँ पर हम लोग आउटपुट यूज कर सकते हैं, और ना ही हम लोग यूज कर सकते हैं यहाँ पर कंप्यूट नोड। यहाँ पर कोई कंप्यूट नोड कंसेप्ट नहीं है। यहाँ पर कोई तो कंप्यूट नोड कंसेप्ट नहीं, इसका मतलब क्या हुआ? सब लॉजिक लगाते हैं। कंप्यूट नोड कंसेप्ट नहीं, मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कि हम लोग जो है नो ट्रांसफॉर्मेशन हैपन हियर। देयर इज नो कंप्यूटर कंसेप्ट। यहाँ पर इस फिल्टर रोड में कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन मैसेज का नहीं हो सकता है, मतलब मैसेज में तोड़ फाड़ चीर फाड़ नहीं हो सकता है। दूसरा चीज है कि हम लोग जो है यहाँ पर इसमें जो है कि कोई भी अगर आउटपुट कंसेप्ट नहीं है, मतलब कि कोई भी हम आउटपुट में से इन्फॉर्मेशन को चेंज चार्ज करके भेज नहीं सकते हैं। सेम काम है। तो जो है इनपुट रूट इन्फॉर्मेशन यहाँ नहीं यूज करते, मतलब इनपुट रूट जो है वर्ड यहाँ पर यूज करोगे तो एरर देगा। तो इनपुट रूट वाला हम लोग जो है, और इफ यू वांट टू सब फिट सम इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द एमक्यू इनपुट नोड, देन यू नीड टू यूज द रूट इंस्टेड ऑफ इनपुट रूट। जैसे हम लोग लास्ट में डाटाबेस नोड में यूज किए थे रूट कंसेप्ट, रूट ROWT रूट, सेम यहाँ पर हम लोग रूट यूज करने वाले हैं इन द फिल्टर नोड। ओके, ना हम लोग डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में फिल्टर करके मैसेज को सेंड करने वाले हैं अलग अलग। तो यहाँ पर हमको यहाँ पर चार तीन नोड हम लोग यूज करने वाले हैं, ट्रू फॉल्स और अननोन। तो लेट मी कनेक्ट थ्री आउटपुट। ओके, एमक्यू आउटपुट एक हो गया, दो एंड तीन। लेट मी make it assemble in the looking good looking way. Now all three has been aligned. Now let me connect it. Let me connect this to this to this, and this to this. Now see the, let me, I'm going to use three queues for this. So let me use the three queues. It is very better to use this queues: sub one dot out, sub two dot out, sub three dot out. I can make a different queue, but I don't want to make a different. So let me do this for MQ input. Let me write it sub one dot out. Okay, now for this
sub 2 dot out for this sub 3 dot. Now it's okay. So this is all about architect diagram. Now what are the logic? Basically I am going to show you. Now here I will write. Let's take a scenario where we have two messages like that. This message. Hope you have seen this message earlier also and this message. हमने जब एक ऑपरेशन कर रहा था ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई, देन हम लोग ये मैसेज यूज किए थे। और एक बार हम लोग वॉल्यूम ऑफ स्पेयर निकाल रहे थे तब हम लोग ये यूज किए थे। सेम थिंग हम लोग मैसेज के यहाँ पर यूज करने वाले हैं अलग अलग सिनेरियो में। यहाँ पर हम लोग कैसे यूज करने वाले हैं, हम लोग क्या करेंगे, जस्ट एग्जाम्पल कि अगर कोई भी मैसेज भेजता है तो अगर स्टार्ट होता है ऑपरेशन वर्ड से, देन वो क्या करेगा, वो भेज देगा ट्रू में, ये ट्रू नोट से बाहर भेज देगा, ये ट्रू नोट से बाहर भेज देगा। इन केस अगर मैसेज भेजता है ये जिसमें स्पेयर वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, देन यानी पैरेंट वर्ड जो है, पैरेंट टैग है जो स्पेयर है, देन जो है फॉल्स भेज देगा। इसके अलावा कोई मैसेज आता है देन ये अननोन भेज देगा। ओके, तो हम लोग ये यूज करने वाले हैं कि अगर कोई मैसेज ये मैसेज भेजता है, देन इट विल गो टू ट्रू। इफ someone send message this, it will go to false, and apart from this, so if anyone sending some message, then it will go to the unknown terminal. Okay? So this is a simple logic we are going to write here. Okay? तो उसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग चेक करने वाले हैं पैरेंट टैग। पैरेंट जो चेक करने वाले हैं, पैरेंट इसमें पैरेंट क्या ऑपरेशन है, ऑपरेशन चेक करने वाले हैं। ऑपरेशन इसमें अगर प्रेजेंट है देन इट विल सेंड टू ट्रू। इसमें चेक करने वाले हैं स्पेयर प्रेजेंट है, देन इट विल गोइंग टू फॉल्स। उसके अलावा कुछ मैसेज होगा तो हम लोग भेज देंगे उसको unknown terminal. Let me give a brief about the failure. I have not connected it failure, but what will happen if some failure happen? Okay, if you know failure concept, what is the failure concept? Failure concept है कि any node, if failure happen with any node, it first tries to go to the failure terminal. If there is no failure terminal found, it will try to search in previous node failure terminal or cache terminal. Basically cache terminal. तो अगर किसी नोड में फेलियर होता है, देन उस नोड में फेलियर टर्मिनल अगर कनेक्टेड है, देन वो फेलियर टर्मिनल में जाने की कोशिश करता है। अगर उस टर्मिनल में अगर फेलियर नहीं मिलता है, देन वो प्रीवियस टर्मिनल में देख खोजेगा कि कैश टर्मिनल, वो कैश टर्मिनल खोजेगा और उस कैश टर्मिनल में जा सकते हैं। मतलब अगर यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हम फेलियर टर्मिनल कनेक्ट नहीं किए हैं, देन मैसेज अगर इन केस इस नोड से फेलियर होता है, देन ये क्या करेगा, ये प्रीवियस नोड के पास जाएगा और प्रीवियस नोड में सर्च करेगा कैश टर्मिनल है कि नहीं। अगर कैश टर्मिनल प्रेजेंट है, देन इट विल गो टू द कैश and send message to the failure queue. Okay, अगर इस टर्मिनल के साथ इशू होता है, देन इट विल गो टू फेलियर टर्मिनल, बिकॉज यहाँ पर इस नोड के साथ ही इशू हो रहा है, इस नोड से ऑलरेडी फेलियर कनेक्टेड है। नेक्स्ट हमने यहाँ पर और एक फेलियर की MQ आउटपुट लगाकर और यहाँ पर हम फेलियर कनेक्ट कर देते हैं। तो इस नोड के साथ अगेन फेलियर होता है, देन इट विल गो टू डायरेक्टली टू दिस फेलियर क्यू। अगर फेलियर कनेक्टेड है, देन इट विल गो टू फर्स्ट फेलियर। अगर फेलियर कनेक्टेड नहीं है, इट विल गो टू द प्रीवियस कैश टर्मिनल। ओके, इसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ा है, तो उसके बारे में जाकर आप यू कैन सी प्रीवियस वीडियो एंड गो एंड विजिट अबाउट द देयर इज वीडियो ऑफ द फेलियर एंड कैच, डिफरेंस बिटवीन फेलियर एंड कैच, देयर इज वीडियो लाइक दैट, फेलियर एंड कैच लाइक दैट। ओके, you will get detail about there. Okay, this is a concept or simple concept of failure and catch. Okay, now let's do some operation of the coding. Okay, first I want to fetch information from the input. To let me type to declare the reference variable. Declare inref reference to, okay, input root, because I'm not going to input here because it will throw an error because it is not allowed here. Now XML NSC. Now let me write here like that. If you, I think this thing I have already taught you, but let me explain one more time. INREF basically pointing to root XML NSC, which is directly a XML message. Root and XML NSC represents the XML message, and under that ये क्या है, अंडर दैट ये जो है चाइल्ड को रिप्रेजेंट करता है, लास्ट चाइल्ड।
इसका जो है मैसेज के अंदर में लास्ट चाइल्ड जो है उसको डायरेक्टली पॉइंट करेगा। लास्ट चाइल्ड कुछ भी हो, मतलब वट एवर बी द टैग, इट डज नॉट मैटर, इट विल डायरेक्टली पॉइंट टू द लास्ट चाइल्ड ऑफ ए XML message. One line answer. And ref will point to the last child of the XML message. For this, what is the last child of this XML? It is the S pair. It is pointing to S pair. For this, what is the last child? This is pointing to article. This is the this is the basically article detail is the last child of this. It's XML message. Okay. What will the last child of this? Last child is the S pair. Okay. What is the last child of this? Last child is the operation. Okay. This is basically the last child of the XML message. So that directly INF will point to the last child. Okay. Now it's okay. Now let's do some of if else operations. Let's do some. Okay. If, okay, field value, field name, not field value, field name, field name, field name. If field name of this, okay, equal to this, then then return to true. Else if, else if field value अगर इसका ये रहे, that क्या ना था, spare, then return false, then return false, false, else, else return unknown. Now and f, my whole complete code has been complete. Now basically we are sending, if the last tag of the XML message, the last child of the XML message is operation, then we are sending to the return to terminal, that is the this terminal. Okay. If last child is a spare, then we are sending to the false, return false, so that we are sending to this. And if apart from anything someone is sending, then we are sending to the unknown. This is basically I have put it here. Okay. Now apart from we are doing nothing, to let me remove the return true. Return true or return true is not preferred, not better to remove the return true. We always prefer to write return false, because we are after that we are not going to do anything like that. Return false. Okay. Return false, because if you are not writing a return true, and if you are leaving it blank, it means that it will take by default as return. So if you are not writing anything, it has a properties to take by default as return true. So it is always prefer to write a return false. Okay. Now हम इसके बाद इतना ही ऑपरेशन कर रहे हैं, उसका हम कुछ नहीं करें, इसलिए रिटर्न फॉल्स लिख दिया. नाउ everything has been completed. Now it's time to test it. चलो टेस्टिंग करते हैं. Now let me add the breakpoint. Let me do the breakpoint. Now let me build and save the bar file. Now let me deploy it. Now let me run the debugger. Okay. Now debugger has been launched.
Let me put some message into test.in. Initially, I am going to put some operation. If we have to see operation, अगर operation message को send करता है, then it will go to the true terminal. It will go into the this terminal. Let me write the message. Now, developer will launch. You see, go inside the code. It first came here. We'll check operation is present or not. You can see message already operation in the input queue. From here also the operation. Okay, right? It will return true. It will go through the this terminal, right? Again, it is going to write the message to the MQ output 2. What is MQ output 2? MQ output 2 is the sub 3 dot sub 3 dot out. Okay, let me now message me written. Let me browse the sub 3 dot sub 3 dot out. You can see that is the message, right? Now let's do the different message, different scenario. Let me now take the message, another type of message, that is type of message. There is another, that is SPR. Now this time SPR sending, then it will go to the failure terminal, right? Because we have condition of SPR. If condition that if SPR, then it will go to the return false. Sorry, return false terminal. So let me again write the message. The message. Now let's go to debug mode. Again, we are going to compute node. Going to check this. This is not operation. The message. This is not operation. This is something SPR. It will go here and return false. Return false, and it will go to the this. Again, this is going to write a message to the sub dot out. Let's browse the sub dot. You can see the same message in the sub2 dot out, right? Now let me again test the different. Let me test the some different message. Let me write the this message. It is neither starting from the operation or now nor starting from the uh, nor starting from the spare. So it will go to unknown terminal. Let me write this. Now it will go here. It will go in the compute node. Again, you can see it will go to the unknown, directly unknown, because it is neither operation or nor spare. It is something like that. Article details. Okay. Now it's go to the unknown, and if you see the sub one dot out, the unknown. Now you can see it's working fine. Okay. Now let me try some wrong message and see what is happening. Okay. Me some do wrong message, wrong XML message, and we write again. No operation. Now let me write it. Now it's go to here. See it go to the failure terminal. It's going to the failure because once it goes here, it will check. It will basically test. Check. There is no failure node have connected here, so it's go here and it is going to the cache terminal, right? So in this way, it's work basically. This is all about the filter node. The filter node देखा कि filter node is basically a node filter the message under some logic defined inside the filter node. On this basis, they send the message to the true terminal, false terminal, and unknown terminal. If some failure happens, you go to the failure terminal. Okay, and this is there is no some output concept, and there is no local environment concept, and there is no input concept. Okay, and there is no transformation happen here. This is much more about the filter node. Okay. Hope आपको
कोई भी टॉपिक क्लियर हो, कोई भी टॉपिक में डाउट हो, देन यू कैन कमेंट मी, यू कैन रीच आउट टू मी फॉर मेल learnandpassofficial@gmail.com। और फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस तरह के वीडियो मिलने के लिए थैंक यू सो मच। यू अगेन, टाटा बाय बाय।